Hello students, welcome to my channel. This is Satyan Mahajan. In last video we have discussed asexual reproduction and sexual reproduction in different organisms, basically plants and animals, of course. Now we are going to discuss in which region the reproduction phase is much greater than which region, right? So let us discuss the reproduction phase over here. In most organisms, the reproductive phase plays a crucial role as it ensures continuity of life. The birth of an offspring is perhaps one of the most important and joyous events in the life of a The post-fertilization events. After fertilization means when male and female gametes have been fused now, and after fusion there has to be formation of zygote, and after zygote there will be mitosis, means cell division, in which multiplication of cells occurs and a new cell is formed, which is called a zygote. sexually reproducing organism. This event, however, is a culmination of events such as the development of the zygote and embryogenesis. Embryo formation. Both these events, incidentally, are the mainstay of post-fertilization, the third stage in sexual reproduction. Did you know that every sexually reproducing organism begins his or her life as a zygote? Yes, we are basically from zygote. Depending on whether fertilization is internal or external, the zygote is either formed inside the organism or outside the in organism. an external medium such as water. After its formation, the development of the zygote is largely influenced by its environment. After its formation, the development of the zygote is largely influenced by its environment. Take the case of organisms such as fungi and algae, whose zygotes are formed either in water, rocks, or soil. Yes, this is outer fertilization, means out These of the body. zygotes develop thick walls that are resistant to desiccation as well as environmental damage. See, the term has come, desiccation. Desiccation means water loss, right? The zygotes have formed a kind of layer, a thick layer, which restricts any kind of water loss from the zygote, right? So this zygote can resist heat as well. However, an unfavorable environment forces the zygote to undergo a period of rest and start storing nutrients before germinating. The environment also influences the germination of the zygote. जैसा क्लाइमेट होगा उसी हिसाब से Apart from the germination होगा. environment, the development cycle. of the zygote is also influenced by the life cycle of an organism. सपोज करो एक जाइगोट है, किसी भी चीज़ का जाइगोट हमने लिया, एल्गी का ले रहे हैं बेसिकली, क्लाइमेडोमोनास का. ये जाइगोट है, अभी यहाँ पे फ्यूजन से बन चुका है ये. अब जाइगोट से बनता है, जाइगोट से ये देखो मल्टीप्लिकेशन हुआ. अब इस मल्टीप्लिकेशन में ये अभी तक एक सेल था, एक सेल से दो और दो से 4 सेल्स हुए, 2 to 4. नाउ जब 4 सेल्स हो जाते हैं तो ये जाइगोट, ये पूरी तरह से ये सेल बर्स्ट हुआ. बर्स्ट होने के बाद छोटे छोटे स्पोर्स निकले, और इन स्पोर्स में ये क्या हैं, यही स्पोर्स आगे चल के एक नए नए मेल और फीमेल टाइप के गैमीट बनाएंगे, और इन्हीं गैमीट्स का, इन्हीं स्पोर्स का फिर से फ्यूज़न होगा, जो कि फिर से जाइगोट बना देंगे. तो ये एक तरह की लाइफ साइकिल है जो कि कंटिन्यूअसली चलती रहती है प्लांट्स में. नेक्स्ट टर्म. If the organism has a haplontic life cycle, as in the case with Chlamydomonas, you will notice that the zygote divides meiotically and forms haploid spores. Haplontic, haplodiplotic you have read. However, in the case of a fern, a pteridophyte with a haplodiplotic life cycle, haplodiplotic life, the zygote studied. divides mitotically to form a sporophyte. स्पोरोफाइट बनता है.
After the initial development, the zygote slowly starts metamorphosing into an embryo जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, through a process known as embryogenesis. एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट से During this process, सी the zygote starts to divide mitotically, माइटोसिस मींस which results in an increase in the number of cells. नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे, इक्वेशनल डिवीजन इट इज कॉल्ड माइटोसिस. Simultaneously, the zygote also undergoes cell differentiation, a process during which groups of cells go through modification to form different tissues and organs. सी इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं. जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो कुछ ऐसे सेल्स डेवलप हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, तो एक सेल से कई सारे सेल्स बन जाते हैं, 16, 70, 16 टू देन 32. एक ऐसी स्टेज आएगा जब इसमें जाइगोट यानी कि यहाँ पर इस कंडीशन में यानी इस एम्ब्रियो कंडीशन में इसमें जितने भी सेल्स होंगे उन सब सेल्स का एक डिफरेंशिएशन कन्फर्म है. मीन्स एवरी सेल नोज व्हाट इट हैज़ टू मेक. सपोज को यहाँ पे 16 सेल हैं, उन सारी 16 सेल को पता है कि हर सेल को आगे क्या बनाना है. तो कितना ब्यूटीफुल डीएनए का मैकेनिज्म होता है. डीएनए को पहले से इन्फॉर्मेशन है कि उसे कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन करना है. एक सेल बना रहा है, देखो स्मूथ मसल्स, एक सेल बना रहा है बोन, एक पर्टिकुलर सेल के पास इन्फॉर्मेशन है पूरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए. एक पर्टिकुलर सेल के आगे डिवीजन होंगे, माइटोसिस होगा, वो बना रहा है पूरा पूरा बॉडी का कार्टिलेज यू नो. एडिपोज टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू. एक सेल ऐसा है डिफरेंशिएट होकर क्या बना रहा है पूरा का पूरा ब्लड. एक छोटा सा जाइगोट जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेज में था, जो कि दिखता भी नहीं था, उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो एक कंप्लीट एडल्ट बॉडी में दिखनी चाहिए. For example, Embryogenesis. the cells of an embryo differentiate to form nervous tissue, नर्वस टिश्यू बना देंगे. which later develops into organs सिस्टम such as the brain or spinal cord. दिस इज entirely called nervous system. Embryogenesis, which occurs in almost all animals, can take place inside or outside the body of the female. ऑफ कोर्स अगर कोई एग में है, पढ़ा है आपने ओविपेरस और विविपेरस कंडीशन. In oviparous or egg-laying animals, such as reptiles and birds, These are the oviparous. process of embryogenesis takes place outside the body of the Outside the female, body, inside the that egg. is, in eggs laid by these animals. The eggs, covered by a hard calcareous shell, कैल्शियम का are बना होता है. usually laid in a sheltered place such as pens and treetops to keep them safe from the prying eyes of predators. Once the